हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यू टॉपिक मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, जिसमें हम एडवांटेज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड सम ऑपरेशंस को समझेंगे। मैट्रिसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स एंड गेट। एडवांटेज ऑफ मैट्रिसेस: first, reduces complicated system of equation to simple expression. Next, adaptable to systematic method of mathematical treatment and well suited to computers. Properties of matrices: a specified number of rows and a specified number of columns. Two numbers describe the dimensions or size of the matrices. For example, this is a 3 by 3 matrix, this is a 2 by 4 matrix, and this is a definition of matrix. A system of m cross n arranged in a rectangular formation along m rows and n columns is called m cross n matrix. This is denoted by A m cross n. This is m cross n matrix. I goes from 1 to m, j goes from 1 to n. Types of matrices. First, column matrix. The number of row may be an integer, but the number of columns is always 1. This is a column matrix, only one column. Types of matrices. Second, row matrix. Any number of columns but only one row, single row. This is a row matrix. Rectangular matrix contains more than one element. The number of rows is not equal to the number of columns. This is a rectangular matrix. This is a 2 by 4 matrix, rectangular matrix. This is a 4 by 2 rectangular matrix. This is a 2 by 4 rectangular matrix. Square matrix. The number of rows is equal to the number of columns. This is a square matrix. This is a square matrix. Number of rows is equal to number of column. Number of rows is equal to number of column. That means 2 by 2 and 3 by 3 matrix is a square matrix. Diagonal matrix. A square matrix where all the elements are 0 except those n on the main diagonal. That is a only element in diagonal. 1 to 1 is a diagonal. 3, 3, 5, 9 diagonal. This is a diagonal matrix. Next, unit or identity matrix, that is a I. Only a diagonal matrix with ones on the main diagonal. मतलब only one होगा diagonal matrix में. Diagonal में only one. This is a 4 by 4 matrix. This is a 2 by 2 matrix. This is a identity matrix. Only one in diagonal. Null matrix, that is zero matrix. All elements is 0. Triangular matrix. A square matrix whose elements above or below the main diagonal are 0. This is a triangular matrix. That means diagonal 1, 1, 3 above diagonal is this is a triangular matrix. 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 This is diagonal or below diagonal elements 0. Upper triangular matrix, a square matrix whose elements below the main diagonal are all 0. Below diagonal below 0. That is a upper triangular matrix. This is a upper triangular matrix. Lower triangular matrix, a square matrix whose elements above the main diagonal are all 0. This is a lower triangular matrix. This is a lower triangular matrix. Scalar matrix, a diagonal matrix whose main diagonal elements are equal to the same scalar. That is, a scalar is defined as a single number or constant. Diagonal all elements same. 1, 1, 1, 6, 6, 6, 6. That is a scalar matrix. Equality of matrices. Two matrices are said to be equal only when all corresponding elements are equal. Therefore, their size or dimension are equal as well as. That is A equal to this, B equal to this. That means A equal to
B. Next, some properties of equality. If A equal to B, then B equal to A for all A and B. If A equal to B and B equal to C, then A equal to C for all A, B and C. This is a A, this is a B. If A equal to B, then Aij equal to Bij. Multiplication of matrices. The product of two matrices is another matrix. The matrices, two matrices A and B must be conformable for multiplication to be possible. That is, the number of columns of A must equal the number of rows of B. For example, A cross B equal to C. A is a 1/3 matrix and B is a 3/1 matrix. That is, C is a 1/1 matrix. This is a multiplication. Matrices operations. B cross A. If B is a 2/1 matrix and A is a 4/2 matrix, this is not possible. This multiplication is not possible. Suppose A into B. A is a 6/2 matrix, B is a 6/3 matrix. This is not multiplied. This is not possible. For example, A into B. A is a 2/3 matrix, B is a 3/2 matrix, then C is a 2/2 matrix. This is possible. मैट्रिसेस का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये आपका मैट्रिक्स है 2/3 का, 1 2 3 4 2 7 एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका 3/2 का, 4 8 6 2 5 3. इसको मल्टीप्लाई कैसे होगा? 1 into 4 प्लस 2 into 6 प्लस 3 into 5. ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा. नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या होगा? 1 into 4 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3. ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा. फिर नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट होगा आपका 4 into 4 प्लस 2 into 6 प्लस 7 into 5. दैट मीन्स थर्ड एलिमेंट. फिर नेक्स्ट 4 into 8 प्लस 2 into 2 प्लस 7 into 3, फोर्थ एलिमेंट. दैट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन में R1 into C1. ये क्या है? R1 into C1. ये क्या है? R2 into C2. ये क्या है? R1. This is R1 into R2, R1 into C1. This is R1 into C2. This is R2 into C1. This is R2 into C2. तो ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा. अब A plus 0 equal to 0 plus A equal to A plus minus A equal to 0. सपोज आपका ये मैट्रिक्स है 6 4 2 3 2 7 माइनस दिस इज 1 2 0 1 0 8. इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 minus 1 कितना हो जाएगा? 5. 4 minus 2 2 2 minus 2 0 2 minus 0 2 3 minus 1 2 2 minus 0 2 7 minus 8 minus 1. Next 4 into 4/2 matrix equal to 4/2 matrix into 4 equal to, दोनों के आंसर सेम आएंगे. आप मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? K इंटू ब्रैकेट में A प्लस B इक्वल टू K प्लस KB. सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी K प्लस Z इन ब्रैकेट इंटू A इक्वल टू K प्लस ZA. नेक्स्ट प्रॉपर्टी K इंटू AB इक्वल टू KA ब्रैकेट के बाहर B इक्वल टू A K ब्रैकेट के बाहर B. नेक्स्ट प्रॉपर्टी K GA इक्वल टू KG ब्रैकेट के बाहर A. मैट्रिक्स ऑपरेशंस. A इंटू I इक्वल टू I इंटू A इक्वल टू A. नेक्स्ट A B C इक्वल टू AB इंटू C इक्वल टू A BC. This is an associative law. A B plus C equal to AB plus AC. This is a first distributive law. A plus B into C equal to AC plus BC. This is a second distributive law. Note first, AB not generally equal to BA. BA may not be conformal. If AB equal to 0, neither A nor B necessarily 0. If AB equal to AC, B not necessarily
C. AB not generally equal to BA. BA may not be conformable. T equal to 1250, S equal to 3402. T into S equal to T into S equal to, ये आपको अब सॉल्व करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 C1, R1 C2, R2 C1, R2 C2, तो आपको ये मिलेगा। ST के लिए भी सेम अप्लाई करेंगे। इस एलिमेंट को कैसे फाइंड करेंगे हम, R1 C1। इस वाले एलिमेंट को कैसे फाइंड करेंगे, R1 C2। इस एलिमेंट के लिए कैसे फाइंड करेंगे, R2 C1। इस एलिमेंट के लिए R2 C2। तो आपको ये, तो ये इसका कहने का दैट मीन्स ये है कि TS नॉट इक्वल टू ST। नेक्स्ट, इफ AB इक्वल टू 0, नाइदर A नॉर B नेसेसरली इक्वल टू 0। टू मैट्रिसेस है ये आपका 1 1 0 0 2 3 -2 -3। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स 0।